1. Riot. फसाद करना, फसाद बर्पा करना, कैश करना. आशोब, अयाशी, हंगामा, हुल्लड़, फसाद, फितना, फतूर. Meaning, a violent disturbance or public disorder characterized by a group of people engaging in aggressive, destructive, or illegal behavior, often directed towards law enforcement or property. Synonyms: uprising, revolt, disturbance, unrest, insurrection, rebellion. 2. Heinous. हौलनाक, सख्त, बड़ा या नफरत अंगेज, वहशियाना, जालिमाना. अजीम. Meaning, heinous describes an extremely wicked, abhorrent, or shockingly evil act or behavior. Synonyms: atrocious, monstrous, abominable, vile, odious, despicable, reprehensible, wicked, nefarious, execrable, diabolical. 3. Accountability. एहतसाब. काबिल मुआखजा. जवाबदही. जिम्मेदार होने की हालत. Meaning, accountability refers to the state of being answerable, responsible, and liable for one's actions, decisions, and obligations. Synonyms: responsibility, answerability, liability, answerableness, obligation, blameworthiness, answerance, chargeability. 4. Seduce. गुमराह करना. वरगलाना. ललचाना, लुभाना, पट्टी पड़ाना, फिसलना. Meaning, seduce means to entice, allure, or tempt someone into engaging in sexual activity or to manipulate someone into doing something they may not otherwise do. Synonyms: allure, entice, tempt, charm, woo, beguile, enchant, captivate, entrap, lure, inveigle. 5. Allegiance. ताबेदारी, इताअत. वफादारी. हाकिमियत को मानना. महकूमी कबूल करना. अकीदत. लगन. Meaning, allegiance refers to loyalty, devotion, or fidelity towards a person, group, cause, or nation. Synonyms: loyalty, faithfulness, devotion, fidelity, commitment, dedication, obedience, fealty, constancy, steadfastness. 6. Prohibited. ममनू. ममनुआ. रुका. Meaning, prohibited means something that is forbidden, not allowed, or officially banned. Synonyms: forbidden, banned, restricted, prohibited, outlawed, taboo, off limits, not permitted, barred, illegal. 7. Harbor. पना देना, सर छुपाने की जगह देना, जहन में रखना, बंदरगाह. पनागा. Meaning. 1. Verb. To harbor means to provide shelter, refuge, or protection to someone or something, often against the law or without the knowledge of authorities. 2. Verb. To harbor can also mean to hold or cherish certain thoughts, feelings, or beliefs, often deep within oneself. 3. Noun. A harbor is a sheltered area of water near the shore where ships and boats can anchor or dock for loading, unloading, or protection from rough seas. 1. Synonyms: verb, provide shelter, shelter, house, accommodate, protect, hide, shield, accommodate, refuge. 2. Synonyms: verb, hold or cherish thoughts, hold, cherish, nurture, entertain, maintain, retain. 3. Synonyms: noun, port, dock, marina, anchorage, haven, quay, mooring, wharf, inlet. 8. Reasoned. ख्यालात पर मबनी. माकूल. मुनासिब. दलील किया. Meaning, reasoned refers to something that is based on reason, logical thinking, and rationality. It implies the use of sound judgment and careful consideration. Synonyms: logical, rational, thoughtful, reasoned, sensible, intelligent, well-founded, coherent, justifiable, justified, sound. 9. Prerequisite. हक अव्वलीन. बुनियादी हक. Meaning, a prerequisite refers to a requirement or condition that must be fulfilled or met before something else can happen or be achieved. Synonyms: requirement, condition, necessity, precondition, essential, qualification, requisite, demand, need, stipulation. 10. Competence. कुछ अच्छा करने की सलाहियत, काबिलियत, इस्तेदाद. अहलियत. समात के इख्तियारात. लियाकत, एक मौजूनियत. सलाहियत. Meaning,
the ability to do something effectively or efficiently, the quality or state of being competent. Synonyms: ability, proficiency, capability, aptitude, skill, expertise, mastery, talent, qualification, efficiency. 11. Confession. एतराफ, इकबाल, इकरार, जिस चीज का एतराफ इकबाल इजहार किया जाए. तौबा. Meaning: a formal admission of one's sins or wrongdoing, a statement acknowledging guilt or crime. Synonyms: admission, acknowledgement, declaration, avowal, revelation, disclosure. 12. Conviction. सबूत, यकीन, सजादही, सजायाबी, एतमाद, तजवीज, सबूत जुर्म, इस्बात जुर्म. Meaning: conviction refers to a strong belief or opinion, often related to moral or religious beliefs, or a formal declaration of guilt in a court of law. Synonyms: certainty, assurance, confidence, faith, belief, opinion, verdict, sentence, judgment. 13. Abrogate. मंसूख करना, मुअत्तल करना, रद्द करना, खत्म करना, किसी कानून या रवायत को मिटाना. Meaning: abrogate means to formally repeal, abolish, or annul a law, agreement, or obligation by authoritative action. It is the act of officially revoking or canceling something. Synonyms: repeal, revoke, annul, cancel, invalidate, nullify, abolish, rescind, void, negate. 14. Covenant. इकरारनामा, मीसाक, मुआहिदा, शर्त, पैमान, अहद, इकरार, अहदनामा. Meaning: a covenant is a formal, binding agreement or contract between two or more parties, typically involving specific obligations and responsibilities. Synonyms: agreement, contract, pact, treaty, promise, commitment, bond, undertaking, compact, accord. 15. Defender. हामी, मुहाफिज, तरफदार, हिमायती, दस्तगीर, नासिर, हिफाजत करने वाला, निगहबान. Meaning: a defender is someone who protects, supports, or advocates for something or someone, particularly in the face of opposition or danger. It can refer to a person or entity that provides defense or protection. Synonyms: protector, guardian, champion, advocate, supporter, guardian, custodian, ally, hero, advocate, champion. 16. Whereabouts. अता-पता, जहां, कहां, तेवर ठिकाना. अता-पता, वो मकाम जहां पर कोई शख्स मौजूद हो. Meaning: whereabouts refers to the location or position of a person or thing. It is used to inquire about or describe the specific place or area where someone or something is currently located. Synonyms: location, position, place, site, destination, address, residence, position, spot. 17. Intervene. हाइल होना, बीच में आना, मुदाखलत करना, दरमियान आना, वक्फा दरमियान आना. Meaning: intervene means to come between or involve oneself in a situation or conflict in order to alter or influence its outcome or prevent further escalation. Synonyms: mediate, intercede, step in, meddle, interfere, intrude, arbitrate, interpose, get involved, take action. 18. Perpetrator. मुर्तकिब, इर्तिकाब करने वाला, वो शख्स जो नुकसानदेह, गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम करता है. Meaning: a person who carries out a harmful, illegal, or immoral act. Synonyms: culprit, offender, wrongdoer, malefactor, criminal. 19. Opaque. धुंधला, जो रोशनी कबूल ना करे, गैर शफाफ, मुबहम, कुंद, नारोशन, तारीक. Meaning: opaque refers to something that is not transparent or translucent, preventing the passage of light and making it difficult to see through or understand. Synonyms: non-transparent, cloudy, hazy, dense, obscure, murky, impenetrable, unclear, unintelligible, incomprehensible. 20. Vengeance. इंतकाम, बदला, मुकाफात,
किसी नुकसान का बदला. Qisas. Meaning, vengeance refers to the act of seeking revenge or retribution against someone who has wronged or harmed you. It involves taking action to inflict punishment or harm as a response to a perceived injustice. Synonyms: revenge, retribution, retaliation, payback, reprisal, vendetta, avenging, redress, vindication, settling scores. On Thursday, the administrative judge of anti-terrorism courts, Lahore, directed handing over the custody of 16 people arrested in relation to the May 9 riots to the military for trial under the Pakistan Army Act, PAA, 1952, and Official Secrets Act, 1923. The order was made on the request of a commanding officer of the military, stating an initial investigation prima facie found the accused involved in various offenses under the OSA. This development came days after the military leadership expressed firm resolve that those involved in heinous crimes against military installations and personnel/equipment, including civilians, will be brought to justice through trial under relevant laws including the PAA and the OSA. The government, too, endorsed this decision, allowing military courts to try civilians, including certain members/supporters of the PTI, for their alleged involvement in the May 9 riots is a glaring assault on fundamental freedoms and democracy in the garb of accountability and the rule of law. Section 2 of PAA allows civilians to be tried by military courts, courts-martial, who are accused of 1. Seducing or attempting to seduce any person subject to this act from his duty or allegiance to government, or 2. Having committed an offense under the OSA, in relation to the military of Pakistan. The OSA relates to offenses such as spying, taking photographs of notified prohibited places, harboring spies, and attempting/abetting such offenses. It carries harsh penalties, including the death penalty, for some crimes. Claims by the government and military that allegations of attacking military installations by civilians in itself is sufficient for military trials under the Army Act or the OSA, therefore, are misleading and not supported by the law. A duly reasoned, written judgment is an essential component of a fair trial. Further, how offenses under the OSA are prima facie made out against those whose transfer of custody to the military has been allowed remains unclear. More importantly, even if the authorities frame charges against the accused under the OSA to bring their cases within the Army Act's ambit, such trials would be in blatant violation of Article 10A of the Constitution that guarantees fair trial, as well as Pakistan's human rights obligations under international law. Pakistani military courts are not independent and the proceedings before them fall far short of national and international fair trial standards for a number of reasons. First, military court judges are military officers who are a part of the executive branch and do not enjoy independence from the military hierarchy. They are not required to have judicial or legal training, and do not enjoy any security of tenure, which are prerequisites of judicial competence and independence. Second, military courts do not give detailed, reasoned judgments and are not required to hold open trials. A duly reasoned, written judgment is an essential component of a fair trial. Even in cases in which the public may be excluded from the trial, the judgment, including the essential findings, evidence and legal reasoning must be made public, except in certain cases such as for the respect of privacy of the parties. Third, the PAA bars civilian courts from exercising appellate jurisdiction over decisions of courts-martial. Courts have held they may use their extraordinary writ jurisdiction to hear cases related to military courts where any action or order of any authority relating to the armed forces of Pakistan is either coram non judice mollified, or without jurisdiction. Contrary to claims made by the government, under Pakistani law the scope of such review is severely limited. Courts too have also interpreted their review jurisdiction narrowly. In the context of review petitions filed by family members of civilians convicted by military courts,
the Supreme Court held the circumstances in which people were arrested, even if they were forcibly disappeared and kept in secret detention for years, was not relevant to its review jurisdiction. Similarly, the Peshawar High Court in another case held the manner of the confessions made by the accused, under the ordinary criminal jurisprudence, would seriously diminish the evidentiary value, but in view of the limited scope available to the high courts, they could not interfere in the convictions handed down by military courts on this basis. UN human rights bodies too have raised serious concern about military trials of civilians in Pakistan. In May 2017, the UN Committee Against Torture said the military trials of civilians were concerning in view of the lack of independence of military court judges, which are within the military hierarchy, and practices of such courts including holding closed trials. In July 2017, the UN Human Rights Committee too recommended Pakistan review the legislation relating to the military courts with a view to abrogating their jurisdiction over civilians and their authority to impose the death penalty and reform military courts to bring their proceedings into full conformity with Articles 14 and 15 of the Covenant in order to ensure a fair trial. Gross miscarriage of justice by military courts is evident in the case of Idris Khattak, a prominent human rights defender, who was forcibly disappeared in November 2019. His whereabouts remained unknown until June 2020, when military authorities informed the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances he was being tried by a military court under the PAA and OSA. On December 2, 2021, it was reported in the media Idris Khattak had been convicted and sentenced to 14 years imprisonment under the PAA and OSA for offenses related to spying. The military court's judgment against him has not been made public. The Peshawar High Court has declined to intervene. Victims and the people of Pakistan have the right to truth and justice in relation to the May 9 riots and the destruction of public and private property, but this is only possible after perpetrators are convicted after transparent, fair trials. Opaque, secret and unjust military trials of select accused may be used to extract vengeance, but there should be no doubt they have little to do with ensuring accountability or the rule of law. The writer is a legal advisor for the International Commission of Jurists. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. जुमेरात को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के इंतजामी जज ने 9 मई के फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार 16 अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट PA 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत मुकदमे के लिए फौज के हवाले करने का हुक्म दिया। ये हुक्म फौज के एक कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इब्तिदाई तहकीकात में पहली नज़र में मुलजिम को OSA के तहत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाया गया था। ये पेशरफ्त फौजी क़यादत की जानिब से इस अज़्म के इजहार के चंद रोज़ बाद सामने आई है कि फौजी तनसीबात और अहलकारों और साजो सामान के खिलाफ घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद बशमूल आम शहरियों को PAA और OSA समेत मुतालिका कवानीन के तहत मुकदमे के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत ने भी इस फैसले की तौसीक की है। फौजी अदालतों को 9 मई के फसादात में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में आम शहरियों बशमूल PTI के कुछ अरकान और हामियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देना एहतसाब और कानून की हुक्मरानी की आड़ में बुनियादी आज़ादियों और जमहूरियत पर वाज़ेह हमला है। PAA की दफ़ा 2 आम शहरियों को फौजी अदालतों कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चलाने की इजाज़त देती है जिन पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। 1. इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को इसके फ़राइज़ हुकूमत से वफ़ादारी से महरूम करना या बहकाने की कोशिश करना। 2. OSA के तहत जुर्म का इर्तिकाब करना। इसके सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज OSA जासूसी, नोटिफाइड ममनुआ मकामात की तस्वीर लेने, जासूसों को पनाह देने और इस तरह के जराइम की कोशिश हौसला अफजाई जैसे जराइम से मुताल्लिक है। इस कानून में कुछ जराइम के लिए सजाए मौत समेत सख्त सजाएं दी जाती हैं। हुकूमत और फौज के ये दावे के आम शहरियों की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमले के इल्ज़ामात अपने आप में आर्मी एक्ट OSA के तहत फौजी ट्रायल के लिए काफ़ी हैं।
गुमराहकुन हैं और कानून की हिमायत नहीं करते। मुंसिफाना ट्रायल का एक मुनासिब तहरीरी फैसला एक लाजमी जुज़्व है। मज़ीद बरा OSA के तहत पहली नज़र में उन लोगों के खिलाफ जराइम कैसे बनाए जाते हैं जिनकी फ़ौज को तहवील में मुंतकिली की इजाज़त दी गई है, ये वाज़े नहीं। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर हुक्काम OSA के तहत मुल्ज़िमान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करते हैं ताकि उनके मुकदमात को आर्मी एक्ट के दायरे में लाया जा सके, तो इस तरह के ट्रायल आइन के आर्टिकल 10A की सरी खिलाफ वर्जी होंगे जो मुंसिफाना ट्रायल की ज़मानत देता है और साथ ही बैन अल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां भी हैं। पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतें खुद मुख्तार नहीं हैं और उनके सामने होने वाली कार्रवाई कई वजूहात की बना पर कौमी और बैन अल-अक़वामी मुंसिफाना ट्रायल के मेयार से बहुत कम है। सबसे पहले फ़ौजी अदालतों के जज फ़ौजी अफसरान हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा हैं और फ़ौजी दर्जाबंदी से आज़ादी हासिल नहीं करते। उनके पास अदालती या कानूनी तरबियत की ज़रूरत नहीं है और मुद्दत मुलाजमत की कोई हिफाजत हासिल नहीं है, जो अदालती अहलियत और आज़ादी की शर्त है। दूसरी बात यह है कि फ़ौजी अदालतें तफसीली और मंतिकी फ़ैसले नहीं देती हैं और उन्हें खिले मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं होती। मुंसिफाना ट्रायल का एक मुनासिब तहरीरी फ़ैसला एक लाजमी जुज़्व है। यहाँ तक कि ऐसे मामलात में भी जिनमें अवाम को मुकदमे से खारिज किया जा सकता है, फ़ैसला जिसमें ज़रूरी नताइज, सबूत और कानूनी इस्तेदलाल शामिल हैं, को आम किया जाना चाहिए, सिवाय कुछ मामलात में जैसे फरीक़ैन की राजदारी के एहतराम के लिए। तीसरा, PAA सिविलियन अदालतों को कोर्ट मार्शल के फैसलों पर अपीलेट दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने से रोकता है। अदालतों ने कहा है कि वो फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत के लिए अपने गैर मामूली रट दायरा इख्तियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक़ किसी भी अथॉरिटी का कोई भी अक़दामा हुक्म तो वो गैर अदालती बदनीयती पर मबनी दायरा इख्तियार के बगैर। हुकूमत के दावों के बरक्स पाकिस्तानी कानून के तहत इस तरह के जायजे का दायरा बहुत महदूद है। अदालतों ने भी अपने नज़र सानी के दायराकार की मुख्तसर तशरीह की है। फ़ौजी अदालतों की जानिब से सज़ा पाने वाले शहरियों के अहल खाना की जानिब से दायर नज़र सानी की दरख्वास्तों के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन हालात में लोगों को गिरफ्तार किया गया, चाहे उन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया गया हो और बरसों तक खुफिया हिरासत में रखा गया हो, इसके नज़र सानी के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक़ नहीं है। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने एक और केस में कहा था कि आम फौजदारी कानून के तहत मुल्ज़िमान की जानिब से किए गए अतराफ़ी बयानात से गवाही की कदर में शदीद कमी आएगी, लेकिन हाई कोर्ट्स के पास महदूद गुंजाइश के पेश नज़र वो इस बुनियाद पर फ़ौजी अदालतों की जानिब से सुनाई जाने वाली सज़ाओं में मुदाखलत नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारों ने भी पाकिस्तान में आम शहरियों के खिलाफ फ़ौजी मुकदमात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मई 2017 में तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने कहा था कि फ़ौजी अदालतों के जजों की आज़ादी के फुक़दान और बंद मुकदमात समेत ऐसी अदालतों के तर्ज अमल के पेश नज़र आम शहरियों के खिलाफ फ़ौजी मुकदमात तशवीशनाक हैं। जुलाई 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी ने भी पाकिस्तान से सिफारिश की थी कि वो फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून साजी पर नज़रसानी करे ताकि शहरियों पर उनके दायरा इख्तियार और सज़ाए मौत के नफाज के उनके इख्तियारात को ख़त्म किया जा सके और फ़ौजी अदालतों में इस्लाहात की जाएं ताकि उनकी कार्रवाइयों को मुआहदे के आर्टिकल 14 और 15 के मुताबिक लाया जा सके ताकि मुंसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाया जा सके। नवंबर 2019 में जबरी तौर पर लापता होने वाले इंसानी हुकूक के एक मुमताज़ कारकुन इदरीस खटक के मामले में फ़ौजी अदालतों की जानिब से इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी वाज़ेह है। जून 2020 तक उनके ठिकाने का पता नहीं चल सका, जब फ़ौजी हुकाम ने जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक़ इंक्वायरी कमीशन को मतला किया कि उन पर PAA और OSA के तहत एक फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। 2 दिसंबर 2021 को मीडिया में यह खबर आई थी कि इदरीस खटक को PAA और OSA के तहत जासूसी से मुताल्लिक़ जराइम में 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनके खिलाफ फ़ौजी अदालत का फैसला मंजर आम पर नहीं लाया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुदाखलत से इनकार कर दिया है। 9 मई के फसादात और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हवाले से मुतासरीन और पाकिस्तान के अवाम को सच्चाई और इंसाफ का हक हासिल है, लेकिन यह सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब शफाफ और मुंसिफाना ट्रायल के बाद मुजरिमों को सज़ा दी जाए।
मुंतखब मुल्जिमान के गैर शफाफ, खुफिया और गैर मुनसिफाना फौजी ट्रायल्स को इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनका एहतसाब कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने से कोई लेना देना नहीं। मज़मून निगार इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस के कानूनी मुशीर हैं। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.